After more than 60 years of service, the Indian Air Force is officially retiring its iconic MiG-21 fighter jets today. A ceremonial farewell will be held at the Air Force Station in Chandigarh, the very base where the first MiG-21 squadron was established, which is why Chandigarh is so significant for the farewell ceremony. Marking this historic moment, the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, will lead the flypast, fittingly flying the same aircraft that trained generations of the Indian Air Force pilots, including himself. The Russian origin MiG-21 was inducted in the 1960s and went on to play a crucial role in multiple air operations over the decades. Its final sortie today symbolizes the end of an era in Indian military aviation. Here's a report. The MiG-21, the sentinel of our skies. For 60 years, it has guarded the nation, training our warriors, testing their courage, and triumphing in battle. A machine of steel, flown with unmatched spirit. The Chief of the Air Staff, joined by Squadron Leader Priya, honors this legacy with a commemorative sortie. Swift, fearless, enduring. Every mission, every landing, a chapter of courage written into history. A legend bows out, saluted by generations. The MiG-21 departs, but its legacy will always remain. All right, remember, this is going to be the moment where all of India will be bidding farewell to the MiG-21. Hence, equally important to tell you all about what makes the MiG-21 so special. It has a maximum speed of over 2,000 kilometers per hour. It has a service ceiling of 17,800 meters to be precise, a range of 1,210 kilometers, a rate climb of 44,280 feet per minute. The armament up to 6 and short-range air missiles are also part of it. The crew includes a single seat. So what's the history of MiG-21? And important to also deep dive into that, which is what's going to also perhaps remind you of the legacy it carries. The first flight that the MiG-21 took was in 1955. It entered service, as far as the Indian Air Force is concerned, in 1959. Most produced supersonic fighter with over 11,500 units produced. It served in more than 50 nations that were involved it was also involved in Vietnam, even in the Middle East conflict. But for India, it's very significant because it was involved in all of the 4 conflicts with Pakistan. It became the backbone of the Indian Air Force and is widely hailed as the workhorse of India's air defense. It played a crucial role in 1965, in 1971 wars, even during Kargil, Balakot airstrikes and Operation Sindoor. All right, let's try and get in some more perspective, because remember, India will be bidding farewell to the MiG-21 at roughly 12 p.m. from Chandigarh. Why is Chandigarh so significant? We will deep dive into that aspect as well. For that, let me quickly go across to Sandeep Bol, our correspondent from News18, who's joining us live from Chandigarh. As you can see, संदीप, आज का दिन बड़े मिक्स्ड इमोशंस के साथ होगा, क्योंकि इतनी रिच लेगेसी रही है MiG-21 की. सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि आज चंडीगढ़ के लिए ही क्यों ये फेयरवेल सेरेमनी चुनी गई. देखिए, चंडीगढ़ के लिए ये फेयरवेल सेरेमनी इसीलिए चुनी गई क्योंकि जब पहला MiG-21 का स्क्वाड्रन रेज हुआ था, वो इसी चंडीगढ़ के एयरबेस पे हुआ था. 28 स्क्वाड्रन में मिग सबसे पहले आए थे और उसके बाद अब जब इनकी विदाई हो रही, क्योंकि ये अलग अलग तरीके के मिग जो है भारतीय वायुसेना ने इस्तेमाल किए हैं, उड़ाए हैं और उन्होंने बेहतर काम किया, बेहतरीन काम किया. तो ऐसे में इससे बेहतर जगह इसकी विदाई का कोई नहीं हो सकता था. 2 स्क्वाड्रन जो है वो बचे थे जिनको कि आज जो है
रिटायर हो जाएंगे यहाँ से। हालांकि एक स्क्वाड्रन जो कि स्क्वाड्रन नंबर 3 जो कि पहले ही जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि उसमें जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क 1 अल्फा वो इंडक्ट हो रहे हैं। तो यानी कि अब जो यहाँ पे जो उड़ान भरेगा वो नंबर 23 स्क्वाड्रन होगा, जो कि लास्ट बार यहाँ पे उड़ान भरेगा, उसकी नंबर प्लेटिंग हो जाएगी। यानी कि अब ये वाला स्क्वाड्रन जो कि मिग का जो यहाँ पे उड़ान भरने वाला है वो अब नंबर प्लेटिंग हो जाएगा और उसकी लेगेसी फ्रीज हो जाएगी। और जैसे ही उस स्क्वाड्रन में नए एयरक्राफ्ट आएंगे तो उसकी लेगेसी उसके साथ जुड़ जाएगी। 16 लाख घंटे से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स है इसके इंडियन एयरफोर्स में और अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट यहाँ पे यूज किए हैं। 800 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायुसेना के पास थे, अलग अलग तरीके के। फिलहाल MiG-21 की सीरीज तो जो फेज आउट हो गई है, रिटायर हो रही है, लेकिन MiG-29 अब भी बने हुए हैं और वो 2030 तक और अपना काम यहाँ पे करेंगे। और ये अपने आप में ही पीछे इतनी बड़ी लेगेसी अपने साथ छोड़ के जा रहे हैं। 1965 में जब वॉर हुई थी तब उस पर बहुत लिमिटेड यूज हुआ था, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर्स में वो आए थे उस वक्त। लेकिन उसके बाद 71 वॉर में जिस तरीके से इसका यूज हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। 14 दिसंबर को गवर्नर हाउस में जब 4 MiG-21 ने गुवाहाटी से उड़ान भरते हुए हिट किया था, उसके बाद पूरी की तरीके से जो है जंग का रुख बदल गया था। और इसको कहा जाता है कि 80% अगर पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान में अगर धूल चटाई थी तो इसी एयरक्राफ्ट ने चटाई थी। हालांकि इसके एक्सीडेंट्स भी बहुत हुए, क्योंकि मशीन है, जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट्स भी होंगे। कई सारे इसके ऊपर नाम भी जो है अलग अलग तरीके के जोड़े गए, लेकिन इसकी मारक क्षमता पर किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। और अब जब ये फेज आउट हो रहे हैं, फेज आउट होने के बाद उसके बाद इनमें जो सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट आने वाले हैं वो यही है तेजस मार्क 1 अल्फा। और जो नंबर 3 स्क्वाड्रन है उसका भी एक बड़ा दिलचस्प इतिहास है, क्योंकि नंबर 3 स्क्वाड्रन में सबसे पहले मिग जो उसका जो अपग्रेड वर्जन बिज वो भी उसी स्क्वाड्रन में आया था। मिग बाइसन जब अपग्रेडेड वर्जन आया वो भी इसी स्क्वाड्रन में आया था। और अब जो तेजस मार्क 1 अल्फा जो कि इसमें आ रहे हैं तो ये भी इसी नंबर 3 स्क्वाड्रन में आ रहे हैं। तो फिलहाल जो यहाँ पे सेरेमनी होगी, इस सेरेमनी में एक बार फिर से वही चीजें दोहराई जाएंगी जो 60 के दशकों में या युद्ध के टाइम पे दोहराई जाती थी। जी संदीप जी, इतनी विस्तार से हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड विद दैट लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस माय गेस्ट टुडे। आई एम जॉइंड इन बाय रिटायर्ड एयर मार्शल संजीव कपूर, who is a former DG of Inspection and Safety at the Indian Air Force. Many thanks to you, Air Marshal, for joining in. I want to ask you of your assessment of this rich legacy that the MiG-21 will be leaving behind. It's the beloved warhorse for the Indian Air Force. Perhaps that's also one reason why the Indian Air Force was given that moniker of being the MiG squadron. So if you can take us through the rich legacy, especially when it came to fighting India's war, all the 4 conflicts with Pakistan, that too in a year when India has marked its own new military doctrine through Operation Sindoor. For benefit of your viewers, most of the aspects you have covered in your introduction. But this aircraft was first designed in 1955. It flew. So it's been 70 years. It has been 70 years globally that this aeroplane has been flying. I don't think so there's any machine, and that too a fighter, which has flown for 70 years anywhere in the world. Second aspect, more than 60 countries, 60 countries have flown this aeroplane. In Indian Air Force, we have had approximately 28 squadrons which have operated this aeroplane. This aeroplane joined, as you told us, in 1963 at Chandigarh, but it has operated right from Chabua in the east to Nalia in the west, beyond Bhuj. It has operated from Srinagar in the north to Pune in south. So it is the first non-Soviet, India was the first non-Soviet country to have this aeroplane MiG-21. And it has been upgraded, modified over the years, and today we have reached a stage wherein we are the only country who are regularly flying for any op role this aeroplane anywhere in the world. Air Marshal, how do you think this will now mark a new beginning for India now that we will be phasing out? There's a lot of chatter about how the MiGs, in fact, have far exceeded their intended lifespan. But they've also questioned that this phasing out should have happened much earlier. Why
did India have to witness those crashes to have done this phasing out. But what will this mean now for India when it's looking towards Atmanirbharta or self-reliance? For benefit of your viewers, this fighter is the largest produced in numbers this country has ever had. Around 1,100 of those MiG-21s have flown in Indian Air Force, and of which about 700 plus have been manufactured by HAL. And I told you at one stage, over 20 squadrons were flying this aeroplane. Now compare it with 2 squadrons of Rafale, compare it with 3 squadrons of MiG-29s, and compare it to 20 squadrons operating. So when you extrapolate the accident rate, which is normal, it is obvious that the accidents by that ratio would be proportionately in many multiples of the ones which we do on other platforms. Hence, it appeared as if we had a large number of MiG-21 crashes, but the ratios were much, much within limits. So this is putting to rest all the terminologies which were coined over the years for this platform. Right. I would also like to mention here my deepest and sincere regards to all the engineers, ground crew, technicians, support staff to have maintained this aircraft in fly-worthy conditions for over 6 decades. It is not easy to maintain a legacy aeroplane, and that too in flying. You can just see one aircraft getting airborne for the very last time from Chandigarh. And this aircraft, like you mentioned, has been backbone. And most of the fighter pilots who have gone, through these decades have flown this aeroplane, and each carry a legacy of this beautiful machine with them. All right, let's also listen in, Marshal Kapoor, to what's happening over there in Chandigarh. उसके बाद अलग अलग तरीके के और फ्लाइंग होनी है, तो ये एक तरीके से गौरव का पल है। और जब MiG-21 को उड़ाने के लिए खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख इस वक्त जो है वो यहाँ से टेक ऑफ ले चुके हैं, और ये अपने आप में दिखाता है, एक भरोसा दिखाता है, एक रेस्पेक्ट दिखाता है उस एयरक्राफ्ट के लिए। अभी और भी एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि लाइनअप है, उसके बाद ये धीरे धीरे उड़ना शुरू होंगे। यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके की चीजें होनी है, यानी कि एक बादल फॉर्मेशन में जिसमें कि एयर चीफ इस वक्त टेक ऑफ उन्होंने किया है, आखिरी बार इस कॉकपिट में वो बैठे हैं, उसके बाद जब लैंड करेंगे उसके बाद ये जो है फेज आउट हो जाएगा। तो उसके बाद जो बाकी जो 2 फॉर्मेशन है, क्योंकि पुराने समय में होता था कि जब तकनीक बहुत ज्यादा नहीं थी, तो ऐसे में अगर सपोज कीजिए कि ये एयरबेस है, इस एयरबेस पर सिक्योर करना है तो कैप्स होता है, यानी कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया जाता है, और उसके दौरान ऊपर जो है हवा में 2 एयरक्राफ्ट उड़ते रहते हैं। और उस वक्त इतनी तकनीक नहीं थी कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट किस तरफ से आ रहे हैं, क्या कैसे हो सकता है। तो यहाँ जो ग्राउंड रडार है, ग्राउंड रडार के जरिए ही ये देखा जाता था कि किस तरफ से वो आ सकते हैं, और उसके बाद नीचे खड़े होकर जो है उनको मैसेज दिया जाता था। जो पायलट जो कैप्स में मूव कर रहे होते हैं उनको मैसेज दिया जाता है, उसी तरीके की चीजें यहाँ पे की जाएगी। Let me quickly bring in Air Marshal Sanjeev Kapoor, who continues to stay with us, as we heard Sandeep also highlight the significance of this farewell ceremony taking place not just in Chandigarh but also that formation that will happen, which will in fact be led by the Air Chief Marshal AP Singh in just a while from now. Air Marshal Kapoor, how do you explain the Badal 3 formation to our viewers? 6 Bison variants will be used for it. For your viewers, we Indians are very good in modifying and adapting as per the situation. When we realized in the early 2000s, end of 90s, that the LCA project is not taking shape, a decision was taken to upgrade the existing MiG-21s. So the Indian Air Force went in for a huge upgrade project along with Russians from 96 to 2000. So around 2001, the upgraded MiG-21 started to join our squadrons. So it was called MiG-21 Bisons. And this had, upgraded 4th generation. So it had, state-of-the-art radars. We had R-77 BVR missiles. We had electronic countermeasures. We had a head-up display. So the same platform was modified to make it contemporary to take on. And see where we have come in last 25 years. The LCAs have still not filled
the numbers which we were looking at to replace MiG-21s. We are still short. And in a phased manner, the MiG-21s have been phased out, today being the last two squadrons that are bidding farewell to Indian Air Force inventory. And with this, we come. Now, specifically coming to Badal 3, this is a formation which is flying for the last time, and the Chief of Air Staff is flying in Badal 3. And this formation would be flying for a head of the organization, for head of the fighting arm, to fly with its pilots in combat aircraft is most heartening. It not only lifts up the morale, motivation of all the air crew, but all the technicians, engineers, air traffic controllers, and all associated people who are involved with aviation and administration, who make an effort for this flying to go on, feel elated that the head of the organization has time to come back and be with them once again. Marshal Kapoor, barring the crashes that have taken place, which have also given it the label of being a flying coffin, I think today is more about focusing on the longevity that this aircraft has provided to the Indian Air Force, making it also be known as the MiG Indian Air Force. But having said that, what explains the reasons behind this longevity? Is it just the Russian make of it, or India and the Indian Air Force's adaptability to the newer challenges as well through this aircraft? You covered in your intro too that we Indians have a habit of adapting to every situation, and we modify the equipment that is with us. And we recently saw it in Op Sindoor also, that the equipment that we got from various countries was modified as per our requirement. So similarly, Air Marshal, I'm so sorry. My apologies to interrupt you there. Let me quickly go across to Sandeep Bol, who's our News 18 correspondent, currently stationed on ground right now over there in Chandigarh. Sandeep, जरा जानकारी दीजिए क्या चल रहा है वहाँ पे अभी? देखिए, आज अभी जो हुआ है थोड़ी देर पहले, वो ये है कि जो MiG-21 की जो आखिरी दिन का जो फ्लाइंग है, उसकी पहली फ्लाइंग यहाँ से टेक ऑफ हो चुकी है। खुद एयर चीफ मार्शल ने उस फॉर्मेशन में फ्लाई किया है और यहाँ से टेक ऑफ लिया है, और इस वक्त पूरी एक सॉटी लेके फिर वो वापस आएंगे यहाँ पे बादल फॉर्मेशन में उसको फ्लाई कर रहे हैं। इससे पहले भी पिछले बार भी, जब पिछले महीने ही उन्होंने नाल में भी इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया था। इनका पुराना रिलेशन रहा है इससे, और जब उन्होंने 40 साल पहले जब एयरक्राफ्ट उड़ाना शुरू किया था तो इसी MiG-21 से उड़ाना शुरू किया था। MiG-21 टाइप 77 इन्होंने उड़ाया था। तो अब वो इस वक्त इस चंडीगढ़ के आसमान में एक बार फिर से आखिरी सॉटी ले रहे हैं, और ये एक गर्व का पल है एयरफोर्स के लिए। और एयर चीफ, चूंकि बहुत कम दुनिया के ऐसे एयरफोर्सेस के चीफ हैं जो कि इस तरीके के सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट उड़ाते हों, लेकिन भारतीय वायुसेना के पायलट इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं और चीफ जिनको कि 40 साल बाद जब नाल में वो गए और उसके बाद उनको दोबारा से इस ट्रेनिंग को दोहराना पड़ा, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो पुराना है, और उसके बाद पूरी तरीके से ट्रेनिंग करने के बाद ही फिर अब उस वक्त भी उन्होंने अगस्त में फ्लाई किया था, और अब यहाँ पे उन्होंने टेक ऑफ लिया है। बादल फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ पे लैंड करेंगे। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मेशन जो है वो कैप्स यानी कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल के ऑपरेशन को कंडक्ट करेगा, जिसमें कि एक पुराना युद्ध यानी कि उस वक्त जब तकनीक कम होती थी उस समय की युद्ध को यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिसमें कि जब एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा एवियोनिक्स या बहुत पावरफुल रडार्स नहीं थे, तो ऐसे में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से उसको ऑपरेट किया जाता था। और खास तौर पे कि ये जो आप देख रहे हैं कि, और सबसे अच्छी चीज क्या है, ये सामने आप जो वाटर कैनन देख रहे हैं, इनसे वाटर कैनन सल्यूट दिया जाएगा। एक ग्रैंड सल्यूट होगा। जितने भी एयरक्राफ्ट अभी इस वक्त यहाँ पे एयरबॉर्न हुए हैं वो यहाँ वापस आएंगे तो दोनों तरफ से वाटर कैनन सल्यूट दिया जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ तक इस टारमेक तक पहुंचेंगे, तब तक एयर चीफ यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जो CO-23 स्क्वाड्रन के जो फ्लाई कर रहे हैं वो नीचे उतरेंगे और एक फॉर्म 700 उनके हाथ में देंगे। फॉर्म 700 बताना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक एयरक्राफ्ट का पूरा डाटा डिटेल उसमें होता है।
टेक ऑफ से पहले जिस वक्त टेक ऑफ लिया जाता है तो हर चीज़ की चेकिंग होती है, चेक किया जाता है और उसके बाद उसमें जो फॉर्म है उसमें बॉक्स होते हैं उनको टिक किया जाता है, चाहे वो वेपन सिस्टम हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो रडार्स हो, हर तरीके की इंफॉर्मेशन उसमें होती है। और उसके बाद जब पायलट उस एयरक्राफ्ट को एयरबॉर्न करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको वो फॉर्म 700 दिया जाता है। फॉर्म 700 में पायलट सब चेक करने के बाद उसमें सिग्नेचर करता है और उसके बाद फिर वो टेक ऑफ करते हैं। तो ये जो अभी जो टेक ऑफ हुआ है उसमें भी सेम वही प्रोसीजर यूज किया गया है। और उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे तो जो पूरी फ्लाइंग के दौरान जिस तरीके का एक्सपीरियंस पायलट का था कि मशीन किस तरीके से काम कर रही है, क्या कोई दिक्कत थी, वो फीडबैक भी दिया जाता है। तो इस फ्लाइंग के बाद वो फीडबैक भी दिया जाएगा और एयर चीफ को फिर वो फॉर्म 700 यहाँ पे हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद हमेशा के लिए भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर MiG-21 के इंजन जो है वो बंद हो जाएंगे। तो एक ये लंबी जर्नी है जो कि इसी एयरबेस से शुरू हुई थी और इसी एयरबेस पर ये खत्म हो रही है। हालांकि मिग के वेरिएंट जो कि यानी MiG-29 भले ही अभी भी पार्टिसिपेट करते रहेंगे भारतीय ऑपरेशंस में, क्योंकि उनके स्क्वाड्रन अभी भी 2030 के बाद रिटायर होना शुरू करेंगे, लेकिन MiG-21 के जितने भी अलग अलग जो वेरिएंट है वो अब पहले रिटायर होना शुरू हो चुके थे। 2 स्क्वाड्रन बचे थे, उन 2 स्क्वाड्रन में से एक स्क्वाड्रन जो कि स्क्वाड्रन नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा, उसको पहले ही एयरक्राफ्ट लॉट हो गया, यानी कि जो LCA Mark 1 अल्फा जो इसी महीने अगले महीने जो आने वाले हैं 2 एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं HAL से, वो सीधा उसी में जाएंगे। तो ऐसे में उसकी नंबर प्लेटिंग नहीं हुई है, लेकिन जो स्क्वाड्रन नंबर 23 है उसकी नंबर प्लेटिंग हो जाएगी और नंबर प्लेटिंग होने के बाद उसकी लेगेसी फ्रीज हो जाएगी। और एक बार लेगेसी फ्रीज हो गई तो जिस वक्त नया एयरक्राफ्ट उस स्क्वाड्रन में आएगा तो फिर दोबारा से MiG-21 की जो पुरानी लेगेसी है, यानी कि MiG-21 का पूरा इतिहास, उस स्क्वाड्रन का इतिहास, वो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये एक लंबी कह सकते हैं कि लंबी यात्रा है जो कि अब यहाँ पे MiG-21 की खत्म हो रही है। जी संदीप जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें ये सारी जानकारी दी, पूरी लेगेसी पे इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेट मी